Hello everyone and welcome to my today's session on CSV files and data frames. We all know that data frame is a two-dimensional data structure and it stores the data in the tabular format. In today's session, we are going to learn how the data frame data can be stored in a file. But the question arises, what is the need of storing the data frames in the files? So far, we have created the data frames by using the Python code, run it, and we got the output. We can view the data frame. Next time again, if we want to view the data frame, then again we need to run the code. But it can be possible that the data frames data can be stored into the files and we can access those files as and when needed as per our requirement. So the need of the database is simple. We need the data frames to form the CSV file is to store the data frame data permanently. What we want is we want to store the data frames permanently into the files. Now there are many ways to store the tabular data into the files such as spreadsheets, text files and the MySQL database. Now, if suppose we want to create a spreadsheet using the using the Microsoft Excel, what you will do is you will just open the Excel and you will type the details, data, and you will save it. Now you can access that file as and when required. So this is what we want. So in this session, we are going to transfer the data frames data into the CSV files by using the function to_CSV. This function is used to export the data from data frame into the CSV. So let's start it. First of all, let's understand what are CSV files. CSV stands for comma separated values. Now, as you can see, this is the example of the CSV file. This is the Notepad version and this is the Excel version. So, in the Notepad, you can see there are certain rows and these rows have certain data and this data is separated by comma. So in the CSV file, the data or the fields, they are separated by commas, hence it is called as comma separated values file. So the comma separated value file is a delimited text file that uses a comma to separate values. Each value of the file is a data record and each record consists of one or more fields separated by commas. So as you can see, each row will be called as a data record and each record contains the fields, they are separated by commas. The Excel version, you can see the same data frame values. It has two columns, brand and price, and this is the data. So these are the CSV files. Now why we are using the CSV files? What are the advantages of CSV files? Now CSV file is a simple file format used to store the tabular data such as spreadsheet or the database. Files in the CSV format can be imported to or exported from the programs that store the tabular data, that is Excel or the OpenOffice Calc. CSV files can be used with most any spreadsheet program such as Microsoft Excel or the Google Spreadsheet. Now CSV format is universal and the data can be loaded by almost any software. CSV files are simple to understand and debug with a basic text editor.
CSV files are quick to create and load into memory before analysis. So these are the certain features of the CSV files, and they can also be called as the advantages of using the CSV files. Now let's see some disadvantages of CSV files. जब किसी चीज़ में advantages होते हैं तो उसके disadvantages भी होते हैं. So pros and cons are always there. So the first thing is there is no data type information stored in the text file. All typings, whether it is a date, integer, float, strings, are concluded from the data only. By looking into the data, you have to conclude whether its type is date, whether it is an integer value or it is a float value. The data type is not mentioned in the text file. There is no formatting or layout information storable. Things like fonts, borders, column width are lost in the Excel. Also, they have a single sheet in a file. Now, the CSV file can store only a single sheet. As we store the multiple files in the Excel is not allowed in CSV. Moreover, they cannot save cell, column or row. Also, the formulas are not saved into these files. Now, let's open one of the CSV file and check whether it is showing the same features as we have discussed. So I have opened this Excel file. As you can see, it is contains serial number, name, class and fees. These are the columns and this is the data. Now this file is saved as CSV. It has one sheet. ठीक है, अब जो फाइल का नाम है वही आपके शीट का नाम भी यहाँ पर दिख रहा है. अब एक मैं फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर देती हूँ. ठीक है, फीस का ये कॉलम है. फीस के कॉलम में हम एक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं फॉर द समेशन. सम का फॉर्मूला अप्लाई किया, सो द फीस रिफ्लेक्टेड इज 6600 एंड यू कैन सी द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार. यहाँ आपको दिख रहा है, फॉर्मूला भी दिख रहा है. जैसे ही हम ये वैल्यू पर क्लिक कर रहे हैं 6600, तो यहाँ पर मुझे फॉर्मूला भी दिख रहा है, दैट इट इज द एडिशन ऑफ दिस 3 वैल्यूज. ठीक, अब मैं इसे बोल्ड कर देती हूँ, फॉर्मेटिंग अप्लाई करते हैं और मैं इस पर कुछ बॉर्डर भी लगा देती हूँ. ठीक है, ये मैंने किया है. सो वी हैव अप्लाइड द फॉर्मूला और हमने बॉर्डर अटैच किया है इस सेल पे और हमने इसे बोल्ड भी किया है. आई सेव इट. जैसे ही हम सेव करते हैं तो देखिए मैसेज आ रहा है, सम फीचर्स इन योर वर्कबुक माइट बी लॉस्ट इफ यू सेव इट एज CSV. I click on yes. Now I close it. Again I save it. Now I save it in the another file name export_data frame 1. ठीक है, मैं इस नाम से इसे सेव कर रही हूँ. द पाथ है सेम, डी ड्राइव के अंदर, किरण फोल्डर के अंदर. ठीक है, सो आई सेव इट. As you can see, I have saved the file. Now the file has been saved. Let's check whether the editing is saved or not. So my file name is export data frame 1. I just open it. So you can see this is my file and this file has this data 6600. When I click on this 6600, you can see here only the value in the formula bar. It means the formula is not saved, only the value is saved. ठीक है, ऊपर से मैंने यहाँ पर एक बॉर्डर दिया था, वो बॉर्डर भी नहीं है, और मैंने बोल्ड किया था, बोल्ड भी नहीं है. It means the CSV files do not allow formatting as we do in the Excel file. Now there is a single sheet, you can see this sheet has the same name as that of the CSV file. Now I create another sheet. The sheet is sheet 1. Here I write down name, class, and here I write name. Now these are the 2 columns I have saved. Okay, now I save. Now we have to check whether the CSV file is going to save both the sheets or not. Now I save it. ये मैंने सेव किया.
फाइल का नाम मेरा एक्सपोर्ट अंडरस्कोर डाटा फ्रेम 1 है, मेरी पहली शीट का नाम सेम है। अब मैंने और एक शीट बनाई जिसके अंदर न्यू कॉलम्स मैंने डाले हैं क्लास और नेम। इसे हम क्लोज करते हैं, सेव किया और देखिए मैं इसका नेम चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर मैं 1 लगा देती हूँ। मैंने सेव किया, द फाइल इज सेव्ड। नाउ लेट्स सी वेदर द चेंजेस आर रिफ्लेक्टेड और नॉट। दिस इज माय फाइल, अगेन आई एम ओपनिंग इट। तो आप देखिए जो मैंने लेटेस्ट एडिटिंग की थी वो मेरे फाइल में सेव हो गई और जो प्रीवियस डाटा फ्रेम मेरे फाइल में था वो अभी एग्जिस्टिंग नहीं है। तो फाइल नेम आपका देखिए सेम है, जो कि आपका फाइल नेम था वही आपका शीट का नाम है, और यहाँ पर मेरे दोनों कॉलम्स जो नए मैंने बनाए थे वो एडिटिंग है और प्रीवियस शीट जो मेरी यहाँ पर थी वो डिलीट हो गई। इट मीन्स दैट द CSV फाइल स्टोर्स अ सिंगल शीट। Moreover, it won't allow any of the formatting which is used in the Excel file. So in this way you can see that the CSV files are different from the Microsoft Excel files. Now let's move ahead. File encodings can become a problem if there are non-ASCII compatible characters in the text files. Now, if there are non-ASCII characters such as some musical symbols or any other non-ASCII characters, then the file encodings is very difficult. CSV format is inefficient. Numbers are stored as characters rather than the binary values. The computers can only understand the binary values, but the numbers here are stored as the characters. But one advantage is that the CSV data compresses well using the zip compression. So zip compression is very well done using the CSV files. Now let's see the syntax, how you will create the CSV file by using the data frame. So this is the syntax. We have to use the to_CSV function. To_CSV function. This is a function which is used to create the CSV file. Since this function belongs to the data frame, so we have to write down df.toCSV. After that we have to add the parameter list. पहला parameter है आपका r. Now r is placed before this file path. Now r takes care of any symbols that comes under the file path, such as the backslash, or otherwise it gives you the error. Then you have to specify the complete file path along with the file name and extension CSV. Next parameter is index. Index equals to true. By default, the index of the data frame will be saved into the CSV file. Here you can see by default the index will be saved in the file. If you don't want the index, then you will set this value as false. Next parameter is header equals to true. Your data frame contains the column names, so all the column names will be stored as the headings in the file path. Next is the sep. Sep equals to separator. The default separator is comma in the CSV file, as its name is, but you can change any separator, you can use any character, but it should be a single character. Then if your data frame has some null values, or you can say some nan values, then those nan values can be replaced by any string, by any text. So for that you have to use this parameter na_rep. Now file path. This is very important when you are creating the file. This has to be enclosed in the quotations, single or the double quotations. You can use any of them. So you have to give the correct path. Here the path is up to the desktop, and in the desktop this is your file name, student_data.csv. Now I have given here the parameters. Index equals to false, means I don't want to save the index into my file and I want to save the headers. The column heading should be saved. So you can see this is an example. In this example, the column headings are roll number, name and score, and these are the values. You can see
इंडेक्स इज नॉट स्टोर्ड हेयर बिकॉज मैंने यहाँ इंडेक्स दिया है फॉल्स, इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स, तो इंडेक्स यहाँ पर सेव नहीं है। ऐसे ही देखिए डेस्कटॉप के अंदर मेरी एक फाइल है computer.csv, तो आपको एक्सटेंशन का भी ध्यान रखना है, यहाँ पर एक्सटेंशन शुड बी CSV। यदि आप किसी और ड्राइव में सेव करना चाहते हैं तो राइट डाउन द ड्राइव नेम, उस ड्राइव में यदि कोई फोल्डर या फाइल आप सेव करना चाहते हैं तो उसके हिसाब से उसकी पाथ रहेगी। इस एग्जाम्पल में मैंने लिया है डी ड्राइव के अंदर, डायरेक्टली आई हैव क्रिएटेड द फाइल abc.csv। so file path and file name is very important when you are creating the file. Now if your data frame, as you can see in this figure, in this data frame you have this nan value, means this is the empty value, you don't have any value for this cell. So this is the data frame. Now this data frame when stored into the CSV file, it will have the empty string. ठीक है, by default it will have the empty string for that particular value, but this empty string can be filled with some string value. So you can replace the empty value by using this parameter na_rep, means na replace. So you can replace it by any string. So आप सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन में यहाँ पर स्ट्रिंग लिख दीजिए एंड ये पैरामीटर आप यूज करिए along with to_csv. So the data can be reflected and the string will be used in this empty string or the nan value in the CSV file. तो चलिए अभी एक प्रोग्राम करके देखते हैं जिसमें कि हम फाइल क्रिएट करेंगे और उस फाइल को हम क्रिएट करेंगे विद द हेल्प ऑफ पाइथन आइडियली। तो देखिए यहाँ पर एक मैंने डाटा फ्रेम क्रिएट किया है और इस डाटा फ्रेम के बाद हम एक क्रिएट करते हैं CSV फाइल। तो उसके लिए हमें लिखना है df.to_csv पैरेंथेसिस r, सिंगल कोटेशंस में मैं दे रही हूँ d:/। अब यहाँ पर देखिए D के अंदर जितनी भी आपके फाइल्स या फोल्डर्स होंगे वो सारे विजिबल हो जाएंगे, जैसे आप स्लैश लिखेंगे ये सारी चीज़ें आ जाएगी। सपोज आई स्टोर द फाइल इन दिस किरण फोल्डर, तो मेरी पाथ हो गई d/kiran। इसके अंदर मुझे फाइल का सपोज नाम देना है student.csv। Now I am not giving any of the parameters right now, सिर्फ मैं एक सिंपल फाइल पाथ का स्टेटमेंट लिखा है और हम इसे क्लोज करते, सिंगल कोटेशन शुड बी क्लोज्ड एंड हियर आई राइट डाउन द प्रिंट स्टेटमेंट जस्ट टू नो whether the file is created or not while this statement is executed or not. So यदि आपकी फाइल क्रिएट हो गई without any errors, so this will also be executed and you will get the message. So I run it. तो देखते हैं this is the data frame, my data frame is created and my file is also created. Let's see, the file is created in the D drive. It is created in D drive Kiran folder, the student, ठीक है, student.csv। तो देखिए ये मेरी फाइल क्रिएट हो गई है, clear? So the file is created along with the index values. By default the index will also be saved into the file and the column headings will also be saved into the file. But if suppose I don't want the column headings, मुझे column headings नहीं चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रोग्राम कोड में पैरामीटर ऐड करना होगा इंडेक्स। सो आई राइट हियर इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स। जैसे ही मैं इंडेक्स इक्वल्स टू फॉल्स करती हूँ द इंडेक्स वैल्यूज विल नॉट बी सेव्ड इनटू माय फाइल। तो देखते हैं फाइल क्रिएट हो गई है, अब मेरी फाइल को ओपन करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ मेरे इंडेक्स सेव नहीं हुए हैं, ओनली द कॉलम हेडिंग्स एंड द वैल्यूज आर स्टोर्ड। Now again if I want that my values, ठीक है, suppose my data frame contains some nan values, ठीक है, suppose यहाँ पर कोई nan value है, तो nan value को represent करने के लिए हम लिखते हैं np.nan, we write down np.nan and when we are using np means numpy, so we need to import the numpy as np.
So nan values are represented using numpy, so we need to import numpy, and the nan values has to be written as this variable, or you can say numpy dot nan. अब nan values को represent करना है, और nan values को मुझे कोई string उसमें represent करना है, मुझे blank value नहीं show करनी है, तो उसके लिए या empty value मुझे show नहीं करनी है, तो उसके लिए मुझे पैरामीटर देना है na underscore replace equals to, ठीक है, na underscore replace equals to, I give it as suppose str, clear, I am giving this value str, so जहाँ पर कहीं पर भी empty string आएगा वहाँ पर ये display होगा str. Now again I run the code, because I have given the same file name, so it is giving me the error. I will change the file name, it is student11. I run the code and you can see the file is created. यहाँ पर आप देखिए nan value है, तो इस nan value को मैंने replace किया है by the string str. तो आप देखते हैं हमारी फाइल में, this is my file and here you can see it is replaced by str, clear. तो इस तरह से आप अलग अलग पैरामीटर्स यूज कर सकते हैं और अलग अलग पैरामीटर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं. अब मैं इस फाइल को ओपन कर रही हूँ with notepad, so that you can see the files or the data is separated by comma. Now I want that the comma should be replaced by another character. मुझे ये किसी और character से replace करना है. Suppose I want to replace it by pipe. So what I will do is I will use another parameter. That parameter is sep equals to, in single quotation write down the pipe, that is single line, ठीक है. मैंने सेपरेटर दिया है पाइप और मैं यहाँ पर फाइल नेम में 111 कर देती हूँ. इंडेक्स सेव नहीं हो रहा है, नैन वैल्यूज को रिप्लेस किया हमने इससे, और सेपरेटर अब मैं दे रही हूँ पाइप. नाउ आई अगेन रन इट. देखिए डाटा फ्रेम क्रिएट हो गया नैन के साथ. अब मुझे फाइल को चेक करना है. सो दिस इज माई फाइल 111. यू कैन सी 111 फाइल है मेरी, और मुझे चेक करना है सेपरेटर, इसलिए मैं इसे ओपन कर रही हूँ नोटपैड के साथ. तो देखिए फाइल जो कॉमा सेपरेटेड थी, नाउ इट इज पाइप सेपरेटेड. सो द डाटा इज सेपरेटेड बाय पाइप and you can see the blank value, the empty value, it contains str as given by me. So in this way you can create the CSV file by using this data frames. Now let's move ahead and find out what we have to do next is, now this is your data frame. This is basically the assignment for you, that whatever you have understood you have to perform it, you have to practically do it. This is the data frame. ये एक data frame है. These are the column headings: client name, country, product, purchase price. You have to create a data frame and store this into purchase.csv. This is the file name. So you have to create the data frame, and after that you have to store the contents into the CSV. After that you have to put null in the cell, ठीक है. For this value Canada you have to put null, and again you have to store it into another CSV file, details.csv. So in this case we have a data frame and you have to create two CSV files. So try to do it practically so that you can clear all the concepts. If you have any doubt you can ask me. Just learn it, practice it. Have a nice day. Thank you.